Good afternoon, Assalamu alaikum, adab, and a very warm welcome to this panel on the power of storytelling on Pakistani screen today. I'm delighted to be in conversation with a really versatile panel. We've got people who work in front of the screen, behind the screens. We've got a really exciting mix. We've got Sanam Saeed, Mohib Mirza, B. Gul, Faryal Mahmood, and Abid Aziz Merchant. So I'd request all of you to please put your hands together for a very warm welcome to the Karachi Lit Fest. Now, I'm going to start with a quote from a book, Same as Ever. और ये quote हमने काफ़ी दूसरी जगहों में भी सुना है. It's very commonly heard. And it says, stories are always more powerful than statistics. And Abid, maybe I'll start with you because आपकी जो ज़िंदगी की कुछ choices हैं, they sort of resonate with this quote quite closely. You know, Abid spent a long time in banking before making the switch to a career in the arts and in cinema and sort of immersed in storytelling. Now, Abid, we know that is a difficult decision to make, you know, because जब आप वो decision ले रहे थे, obviously there were no guarantees. The opportunity cost potentially would have seemed high. Let's start there and talk to us a little bit about what went into making that decision of moving from banking into a career that places storytelling at its absolute center. Okay, so films were my passion since my childhood. So I'm one of those persons who watch around 20 films a week, and I've been doing that for maybe 35, 36 years. So you can do the math yourself and see how many films I must have watched in my lifetime till now. So the first opportunity I got to step out of banking, that was 21 years after my banking career. That opportunity came this way that I lost my job. I was asked to resign. So मैंने कहा अब मैंने दोबारा job नहीं करनी है. I always had this thing in mind that I will retire by the age of 45. It happened a bit sooner. It happened at the age of 40. मैंने कहा चलो अपना शौक पूरा करते हैं. तब शौक पूरा करने के लिए क्या किया जाए? So I was collecting art when I was a banker. You know, bankers have a good salary. They have, good money to spend on art and all these things. So I was collecting art and I was friends with a lot of artists. So they said, why don't you open up an arts initiative, a gallery, a residency program or something like that. I said, let's do that. तो वो मैंने शुरू किया. Yes, I'm a big risk taker. तो मेरे लिए वो कभी भी नहीं था कि what will happen, how will I survive, will this business work, will it not work. Ultimate was that I wanted to get into cinema. Cinema was my love, it is my love, and it will always remain my love. So that's how a cinema bhi aisa maine, I had this thing, I want to go to Cannes, I want to go to Venice, I want to go to Berlin, I want to go to Sundance, I want to go to Locarno, I want to go to South by Southwest, I want to go to all these big festivals, not just as a visitor but as a guest, as they inviting me with my films. So the first project I did, we got into South by Southwest. A short film I did, we premiered in Venice in competition. It went to American Film Institute AFI Festival. It went to Sundance. It won 20 awards. It was acquired by The New Yorker. It was acquired by Canal Plus in France. And it went on, and it's still, it's been 3 years, it's still playing in festivals. It's done over 100 festivals. Another short film, 1978, which I did, premiered in Locarno. I was able to go because I didn't have any experience in this field. So I wanted to learn. So I started studying again at the age of, say, 45, 46. I registered myself to the labs, the film labs, producing labs. So I went to Locarno's producing lab. I went to Cannes lab. I went to Venice Biennale College Cinema. I did online workshops, I did physical workshops, I trained myself to become a producer क्योंकि यहाँ लोगों के दिमाग में पाकिस्तान इंडिया में producer जो है वो investor है जिसके पास पैसा है. It doesn't work that way around the world.
A producer is not only the financier or the investor, that's the executive producer. So in my latest film, my wife Alia, who's somewhere around here, she's the executive producer, I'm the producer. I hope that answers your question. Yeah, absolutely. And maybe I'll share your mic. Yeah, sure, sure. B, I want to bring you in here. And, when I was prepping for the panel, मैंने Ken Burns का एक quote पढ़ा, and it said, "The common stories are 1+1=2, and we get it, they make sense. But the good stories are about 1+1=3." And you're someone, B, whose bread and butter is storytelling. You're immersed in it every day. Start us off by talking about how you see the magic of storytelling and what really makes for a compelling story. Ji Adab. Well, I don't know if I qualify to answer this question yet as a storyteller. मुझे लगता है कि हर इंसान किसी ना किसी हद तक स्टोरी टेलर होता है. सारा दिन हम एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं. आजकल तो बहुत सियासी और गैर सियासी कहानियाँ हैं सुनाने को. So we are telling the story and also we are writing a history through fiction, which is extremely important. कि जो भी कहानी मेरे लिए एज अ स्क्रीन राइटर, एज अ प्ले राइट, जो चीज़ मुझे लगता है कि जो मुझे नज़र आ रहा है, मेरा काम है उसको लिख देना. ना उसको मुझे कहीं अच्छा दिखाना है, ना कहीं बुरा दिखाना है. जो जैसा है वैसा अगर मैं लिख सकती हूँ और आप तक पहुँच जाता है, तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट अ गुड स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. जो रिफ्लेक्शन है मेरी सोसाइटी की, जो मुझे नज़र आता है, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे इर्द गिर्द की कहानियाँ हैं, अगर मैं लफ्ज़ों के ज़रिए उस कहानी को लिख सकती हूँ, तो दिस इज़ गुड स्टोरी फॉर मी. It's an honest story, at least. That honesty is a good story, definitely. Yeah, thank you. Mohib, I'm going to bring you in here. Thank you for being with us. I know you've been on a busy schedule. No, thank you for having me. Thank you so much. आपके वालिद साहब का किरदार आपकी ज़िंदगी में, from what I understand, अहम रहा. जी. As he was an artist, a poet, और वो influence, obviously, I imagine, must have been indispensable in its own way. And Mohib, that's not something one can take for granted, ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में, the role of the father in sort of influencing the son in taking up a career like this. जी. I'm very keen to ask you to start off by talking about your relationship with your father and the sort of salient influence that he had in choosing a career that involves storytelling at its heart every day. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, बहुत शुक्रिया. ये सवाल ज़िंदगी में मुझसे कभी नहीं पूछा गया. 1.5-2 साल ही हुए उनको गुजरे हुए, तो वो काफ़ी एक इमोशनल सी एक सिचुएशन है मेरे लिए. मेरे वालिद का किरदार मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है, जिस तरह सबके वालिदैन का होता है या ख़ास तौर पे वालिद का होता है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपका पहला स्टार वही होता है, आपकी ज़िंदगी का पहले हीरो वही होते हैं. तो चूँकि हालात व वाक़यात की बुनियाद पर वो क्रिएटिव आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वजह से मैं अदाकार बना, लेकिन मुझे ऐसी इन्वायरमेंट मिली जिसमें गज़ल नाइट्स हो रही हैं या पोइट्री की बात हो रही है, या अगर अनवर मकसूद साहब कुछ पढ़ रहे हैं टीवी पर, तो मेरे अगर 2 सवाल हैं तो उसका जवाब मुझे बहुत बेहतर तरीके से मिल रहा है. या मेरी दादी, उनकी उर्दू, ये इस तरह की जो मेरा माहौल था घर का, वो बहुत ज़्यादा वो था. तो बस वही जब घर आप वापस आएँ अपना कोई प्रोजेक्ट करके और आपके वालिद साहब आपको बता रहे हों कि ये जो सिचुएशन थी इसमें आपने ऐसे परफॉर्म किया, अगर आप ऐसे करते तो ये बेहतर होता, या अगर ये कपड़े या ये वार्डरोब अप्रोप्रिएट नहीं थी या ये लाइट अप्रोप्रिएट नहीं थी, घर में डिस्कशन हो रहा हो, तो ये बहुत इसकी वजह से मैं ग्रो बहुत कर सका एज एन आर्टिस्ट. तो बस यही बात है. बाकी ये बात मैंने सीखी ज़रूर कि जो क्रिएटिव आर्ट्स है वो किसी बेताले का काम नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि जो बेताले होते हैं वो कोई कमतर होते हैं, ये मतलब नहीं है. ये सिर्फ वजाहत है इस बात की जो मैंने अपने घर में अपने वालिद से समझी, कि जो बीट सेंस में होगा वो राइटर भी है, वो शायरी भी कर लेगा, वो पेंटिंग भी, जिस तरफ वो प्रैक्टिस करेगा वो वाली उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी.
लेकिन अगर वो ताल में नहीं है तो वो क्रिएटिव आर्ट्स के ज़ुमरे में बहुत अच्छी तरीके से जेल नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई ऑफ बीट एक्टर आ जाता है जो उतना रिदम में नहीं होता, तो हमें अपने आप को ऑफ बीट करना होता है इन ऑर्डर टू कन्विंस के जी सीन दिल से हो रहा है या सच्चा हो रहा है या टाइमिंग में हो रहा है. सो ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आई एम लकी कि मुझे मिली और वालिद की वजह से मिली. Thank you, Mohib. I know that's not an easy conversation. Bahut shukriya. Sanam, welcome to the festival. Thank you for being here. And B was just talking about how history is being written now through this really interesting medium. And it's not just books anymore. किताबें सिर्फ नहीं हैं, लेकिन अब स्क्रीन पे पर्दे के थ्रू तारीख लिखी जा रही है, नरेट की जा रही है. And that can take so many forms, right? It can be subtle, beautiful subtext where you're exploring and experimenting. लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं that you can go the other extreme with very jingoistic cinema, with sort of almost quasi propagandist आप कह लें, which can be quite clunky. In fact, from some parts of the world, हम देख रहे हैं कि you'll always see the Muslim as the terrorist. You'll always see a particular country demonized. थक गए हैं अब वही देखते देखते. So Sanam, I wanna start by asking you, what direction do you think Pakistani cinema is taking or should steer towards? Because reactive होना बहुत आसान है. जिससे किसी और ने अपने सिनेमा में हमें demonize किया तो we just sort of tit for tat. But where do you sort of take stock of our cinema today and kind of going forward? Thank you. Assalamu alaikum. Well, this recent wave of films that have just come out, like Faryal's Vakri or Chikkar or Taksali Gate, these are the genres that we usually would want to see on TV, but we couldn't because of stereotypical or taboo topics that were being discussed. और हमारी फिल्मों में सिर्फ entertainment होती थी, and very unrealistic, very fantastical, and just it wasn't, you couldn't really connect with them. It was pure entertainment. But I'm excited now that these last 4-5 films that have come into the cinema, Nayab bhi उसमें से एक था, we have now moved towards the more gritty genre to show a more real side of life. Topics ज़्यादा dark हैं, topics ज़्यादा relatable हैं, topics ज़्यादा emotional hai, because it shows the underbelly of society as opposed to this fantastical गाँव में नाच गाना and all that. And शादी से हम लोग शुक्र है थोड़ा हट के आ गए हैं, क्योंकि टीवी पे भी वही दिख रहा है, ज़िंदगी में भी वही हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी, सिनेमाज पे थोड़ा दिमाग थक जाता है वो देख देख के. So I'm really really excited क्योंकि ये genre सिर्फ हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देखने को मिलते थे, और यहाँ पे हमारे इतनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अभी तक हमारे पाकिस्तानियों के लिए इज़ नॉट अवेलेबल. या तो वो जी है या ये है या वो है, एंड एवरीवन इज़ नॉट सब्सक्राइब टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. सो आई इनकरेज एवरीवन कि आप जाएं सिनेमाज में, क्योंकि पहले हम लोग डिसहार्टन हो गए थे कि ये क्या फिल्में बन रही हैं अब. बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, पीपल से कि नहीं, आप लोग कहते हैं सपोर्ट सिनेमा, कुछ अच्छा दो तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फिर भी वो टिकट के पैसे दें, वो सिनेमा आएँ, ताकि सिनेमा जारी रहे, सिनेमा मेकर्स, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स इनकरेज रहें. Because as Saba was saying, filmmaking and storytelling is so diverse and dynamic, and unfortunately किताबों का दौर in the younger generation is kind of dying out. It's all very audio visual, so you've got the screens always, and it's so powerful storytelling. जिस तरह cinemas में आप, films have changed perspectives, films have changed opinions about different countries, films have brought people together, they've got such a strong impact on our understanding of the world. So I see storytelling, no story lives unless someone wants to hear it, right? So you have to keep giving them stories, and koi na koi hoga sunne wala. So I'm excited to see where cinema is going these days. Yeah, thank you, Sanam. I completely agree. So before you go to Faryal, can I just add of something? Of course, absolutely do. ठीक है, make films एक बहुत मसला मैंने face किया उसमें. So जैसे आपने कहा, the West has been demonizing us. We made a film. It was a grand jury award nominee at South by Southwest in 2020.
It starred Farhan Tahir and our legendary Kavi Khan. ठीक है? In which we showed that Muslims are not terrorists. But we got banned in Pakistan because our censor board didn't understand the film. ठीक है, उन्होंने क्यों बैन की? उन्होंने इसलिए बैन की कि आपने एक मुसलमान को टेररिस्ट दिखाया है. मैंने कहा नहीं, हमने मुसलमान को टेररिस्ट नहीं दिखाया है. FBI अज्यूम कर रहा है कि वो मुसलमान टेररिस्ट है. वो मुसलमान टेररिस्ट नहीं है. सेंसर बोर्ड ने कहा आपने जी मस्जिद में मनी लॉन्ड्रिंग दिखा दी है. ने कहा मस्जिद में हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं दिखाई है, वो FBI अज्यूम कर रहा है कि मस्जिद में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है. You try to understand, लेकिन वो सोच समझ ही नहीं थी. It got banned. I tried my level best up to the level of the information minister. But nothing happened. The film is still banned in Pakistan. It's called I'll Meet You There. It's not available in Pakistan. Not many people have seen it. But for that film, we were honored by the Hollywood Muslim Public Affairs Council. If the Hollywood Muslim Public Affairs Council honors us, would that be film against Islam? No. बट वो सेंसर बोर्ड को कौन समझाए? तो मैंने कहा बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म इस वक्त, आई शुड ब्रिंग अप दिस पॉइंट कि सेंसर बोर्ड हैज टू बी अ बिट मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर लिबरल. और आबिद, हम ज़रूर इस टॉपिक की तरफ दोबारा आएंगे. I've definitely got it in the questions. I'm really glad you brought that up. Faryal, welcome to KLF. It's so lovely to have you with us. Thank you. Thank you. So, congratulations on Vakri and so much more. I hope I'm pronouncing it correctly. Yes, you are. Vakri. Vakri. Thank you. Bahut Mubarak. A huge congratulations. Now, Faryal, let's talk about Vakri. You know, it's rural Punjab mein set hai. If I'm not mistaken, iska matlab hai one of a kind. बिल्कुल. And उर्दू में अनोखी कहेंगे इसको. Anokhi, right? That sounds much better. I think Vakri is a Vakra title, na? The Punjabi. word Vakra, you know, Punjabi word Vakra. Yeah. No, I meant it sounded much better than how I put it. But you know, so Faryal, it uses the story of a woman through the lens of social media, क्योंकि वही दुनिया में हम आज रह रहे हैं. And I thought that, you know, that's such an intelligent device to use औरतों की जद्दोजहद दिखाने के लिए, you know, both in claiming physical space but also digital space. दोनों का मसला रहता है. और मुझे जो एक चीज़ when I was researching about the film that really stood out for me was कि बहुत वही जो सनम अभी कह रही थी, you know, when you say gritty, nuanced, it's not your typical cookie cutter kind of cinema. Not at all. तो हमारे ऑडियंस को ज़रा सा बताएं फरियाल, आपका क्या एंट्री पॉइंट था into this very complex and quite an internally diverse character. She's not just one blanket kind of a, there are lots of shades. किस pitch पे आपने उसको play किया, and talk to us about the world of Vakri basically. Hello everyone. Assalamu alaikum. I am really hoping that some of you have watched Vakri. It was in the cinemas playing for a month. It's still playing today It's also. still playing. Matlab, when I read the script, it was so like it kind of like just made me think कि ये कितना crazy है, क्या ये पाकिस्तान में चल जाएगी? And that's what I asked him. I was like, वो तो हम कर लेंगे, बना भी लेंगे, क्या ये release होगी? You know? And the thing is, there is no, like, it's not out there, or it's not just जिस तरह इसको bold का title दे दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी फिल्म में, ऐसा कुछ नहीं है बकरी में. The only bold thing is she takes her leg out and she sits like this, and that is called bold. I don't understand. I think why I signed the film. एक तो ऐसा स्क्रिप्ट आना जिसमें आप ये एक तरह से कंदील बलोच को ट्रिब्यूट था, उनकी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख के उसमें से बहुत सारी चीज़ें ले के मैंने बीच में चीज़ें ऐड की थी, एंड जस्ट टू play her or like play someone like her and not be judged the way she was, that was my main goal, कि ये आवाम कहीं ना कहीं मेरे लिए एक soft point हो,
you know, इस कैरेक्टर के लिए, वखरी के लिए एक सॉफ्ट पॉइंट क्रिएट, और ये बहुत मुश्किल था to show skin and still have people feel for you, you know, in this society. It was very difficult and then she's a school teacher and she has a son, and you know, she's a very normal person. She's like, so I played two characters basically. She is Noor and then her alter ego is Vakri. So Noor is very like एक आम औरत जो बच्चियों को स्कूल में पढ़ाती है और उसका एक ख्वाब है कि उसने बच्चियों के लिए स्कूल खोलना है. वो एक ऑनेस्ट लड़की है जो बस झूठ नहीं बर्दाश्त करती और उससे शी वांट्स टू सी एवरीवन इवॉल्व, स्पेशली पेरेंट्स हु आर रेजिंग their little girls evolve. And that in itself is very like, you know, forward कि हाँ ठीक है. People who cannot relate to Vakri या उनको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है और ये क्यों इस तरह कर रही है और ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी. चलो एटलीस्ट आप नूर की बात समझ लें, वो क्या करना चाह रही है. So I feel like it was very smartly done actually, the way they took, you know, the way Iram wrote, you know, Vakri, and the way it was edited, it was just like very crisp. And the thing is, when I watched it, I didn't feel like I was being preached or anything. It felt very like entertaining. It was so entertaining, and that's the thing. Everyone who came out after watching Vakri was just like in that Vakri zone, ke whoa, you know, like just blown away. And that for me was a huge achievement because आपने ठीक है, आपने मुझे accept कर लिया एक actress के तौर पे जो बड़ी screen पे आ रही है, ठीक है, आपने वक्री को accept कर लिया, लेकिन आपने उसको enjoy भी कर लिया. ये तो बहुत बड़ी बात है, you know. So I now that, you know, it's I think it has just one show in Newplex now. It's been a month. Now when people come up to me and say हाँ हम वक्री नहीं देख सके, I'm like, too bad you didn't get to watch it. It was actually a very good film. बहुत अच्छी फिल्म जो साउथ बाय साउथ वेस्ट जा रही है. साउथ बाय साउथ वेस्ट ऐसी कोई फिल्म उठ के नहीं चली जाती है, you know. It has to look a certain way. It has to be a certain way. It has to tell a story in a certain way. So if we are not going to actually support our cinema, जिसमें हम इतनी मेहनत करके इतने प्यार से काम बना रहे हैं, तो हमें बाहर से तो पे छोड़ देना चाहिए ना. एंड यहाँ पे तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है. बाहर से एक्चुअली हमें रिकग्निशन मिल रही है. ओवर हियर लाइक पीपल डोंट इवन स्टेप आउट टू गो वॉच मूवीज. वी नीड टू चेंज दैट. We need a revival. We need a cinema revival. After doing Vakri, I was like, okay, so I don't know if I want to do an art film for Pakistan anymore. क्योंकि यहाँ बैन हो जाती है. छोटी सी भी कोई बात होती है, कोई भी सच बोला जाता है तो उस पर बैन हो जाता है. And I don't want to do anything that's not such, you know. तो मतलब I completely forgot where I was heading with this, but anyways, I'm done. Yeah, Thank you. Thank you. Thank you. And B, maybe you want to come in here because I know we were speaking about this on email as we were discussing the session to say ये काफ़ी अजीब चीज़ है कि ग्लोबली हमारी कहानियों को रिकग्निशन मिल जाता है एज फरियाल वाज सेइंग, लेकिन यहाँ पे ना रिलीज़ की ना रिकग्निशन की गारंटी है. इफ़ यू वांट टू कम इन ऑन दैट. सही बात है. अभी ये आपने देखा कि कितना गम है यहाँ कितनी तकलीफ़ है. वैसी ही तकलीफ़ मैं महसूस करती हूँ एज अ स्क्रीन राइटर ऑल्सो. Last year, one of the web series that I wrote was Z5. अब Z5 यहाँ बैन है, पहला कदम. फिर उसके बाद वो साउथ बाय साउथ वेस्ट की the only South Asian web series that got selected there. देख ली वहाँ लोगों ने. फिर अब एक और मेरी शॉर्ट फिल्म है जामन का दरख्त जो फाइनलिस्ट में है कान के. फरियाल हैज़ रेड द स्क्रिप्ट. वो देख लेंगे यूरोप में चंद लोग.
मगर बात तो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। कहानी तो मेरी यहाँ की है, किरदार मेरे यहाँ के हैं, मैं खुद यहाँ की हूँ। तो अगर इन तक नहीं पहुँच सकती और बैन कर दी जाती है तो मुझे तो कुछ समझ से में नहीं आती है बातें कि जो चीज़ें बैन होनी चाहिए वो तो खुलेआम हैं, और अव्वल तो कुछ भी बैन नहीं होना चाहिए। तो आप क्यों एक सिस्टमैटिकली इन चीज़ों को बैन करते हैं या इनकी स्पेस क्रिएट नहीं करते? आई टोटली एग्री कि ये इस तरह का जो पैरेलल सिनेमा या स्टोरी टेलिंग होती है उसकी एक नीश ऑडियंस होती है। मेरी टेलीविज़न पर भी एक नीश ऑडियंस रही है, और वो नीश ऑडियंस क्रिएट हो जाती है, वो है मौजूद, वो आ जाती है वो देखने जो से देखना है। तो आप एक नीश सिनेमा क्रिएट कर दीजिए। आपका कौन सा कमर्शियल सिनेमा इस कदर तरक्की कर रहा है तो आप एक दो स्क्रीन्स दे दें उनको, और जो लोग हैं समझदार वो देख लेंगे। फिर आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों को आप ये चीज़ें नहीं दिखाना चाहते, क्या उनके पास अब एक्सेस नहीं है इस दौर में कुछ भी देख लेने का दुनिया भर में जो हो रहा है? तो ये जो एक ढकोसला है और दिल को ये तसल्ली है कि हम रोक रहे हैं दिखाने से तो ये रुक रहा है, ऐसा है तो नहीं। सो ये एक बात है कि जब ये खुशी होती है कि आपकी पजीराई हो रही है, बाहर इन चीज़ों को, आपके टैलेंट को, आपकी कहानियों को इतना अप्रिशिएट किया जाता है, तो साथ एक बहुत गहरा दुख है मेरा कि मैं तो यहाँ के लिए आई वॉन्ट टू एड्रेस माई ऑडियंस। मैं इन लोगों से बात करूँ क्योंकि इन्होंने ही मुझे ये अपनी कहानियाँ दी हैं। तो वो चंद लोग अगर एक इंटेलेक्चुअल लॉट बैठकर कहीं यूरोप में फ़िल्म देख लेगा तो कुछ ख़ास बात बनेगी नहीं जो हमें करनी चाहिए थ्रू फिल्म मेकिंग, वो हम वहाँ फेल कर जाएंगे। Can I say something? Please, of course. Going back to Jamun Ka Darakht, when Beagle had sent me the script, I literally had cried for 2 hours. It was so intense and I felt it while I was reading it. Can you imagine कि जब वो shoot हुई होगी और जब वो बन के पूरी edit होके ख़त्म हुई होगी तो वो क्या, उसका क्या मतलब, what is going to be the impact of that film, and you're depriving your own people of that film. It is ridiculous. It is it is ridiculous. Like, we need, because it's such a well written script, it is intense, we deserve to watch this cinema, you know. It's so sad. जितना दुख इनको है उतना दुख मुझे है, बहुत दुख है। मेरा यहाँ सवाल है कि फिर मौला जट कैसे चल गई? नहीं, मौला जट मेरा ख्याल है लिखने की बात नहीं है। जो चीज़ शायद हम भूल रहे हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस अग्रेसिव मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। अब आप सबके जो मोबाइल फ़ोन है उसके एल्गोरिदम में जब तक वो पैटर्न नहीं बनेगा फिल्म के बिजनेस प्लान के अंदर, मेरे हिसाब से जब तक साल भर की प्रमोशन नहीं होगी, मौला जट में सब कुछ था, ब्लड एंड गोर, उससे ज़्यादा सर किसी फिल्म में नहीं कटे होंगे, बहुत खून खराब, बहुत कुछ था, जबकि रोम का पंजाब भी दिखाया गया था उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ अच्छी है, कहानी बहुत हमारी 50 दफ़ा की सुनी हुई थी, उसकी एक रिकॉल वैल्यू भी थी। जो सारे किरदार थे, ख़ास तौर पे हमज़ा अली अब्बासी ने जो किरदार किया है वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश टोन थी, नया सोड़े वो उसको चेंज नहीं कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से जो मार्केटिंग उसकी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत बड़ी मैसिव कैंपेन थी। अब होता यह है कि जिसको हम कह देते हैं आर्ट फिल्म या पैरेलल सिनेमा, मेरे लिए तो फिल्म होती है, लेकिन जिसको हम कैटेगराइज कर देते हैं उसके लिए उस हद तक बजट नहीं होता मार्केटिंग। अगर मुझ तक पैगाम ही नहीं पहुंचा है तो अब बताइए मैं क्या करूं, और फिर बाद में मैं ये कैसे बुरा फील करूं कि ओ मैं नहीं देखने गया इन टाइम। चले मैं तो एक्टर हूं, मुझ तक किसी न किसी तरीके से ये बात पहुंच जाती है, लेकिन आम आदमी तक क्या उसकी रसाई मार्केटिंग हो रही है? इसको स्ट्रैटेजाइज करना होगा कि किस कैटेगरी को, जैसे इन्होंने कहा कि जी नीश ऑडियंस है, तो क्या नीश ऑडियंस के को बगैर फोर्स किए उनको इस बात की इंफॉर्मेशन है कि इस दिन इतने बजे और इसकी वजह ये है और देखने की। और एक और गलती मुझे लगता है हम्बली कि हम जब ट्रेलर बनाते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन सही सेट नहीं कर पाते समटाइम्स।
तो क्या हम एक आम आदमी के हिसाब से उस फिल्म की कहानी की एक्सपेक्टेशन सही कर रहे हैं? वो खुद फैसला कर लेगा मैंने देखना है नहीं देखना। सो 10 में से अगर हम 5 लोगों की एक्सपेक्टेशन सही कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका फुटफॉल सिनेमा में बढ़ जाएगा। और आखिरी पॉइंट ये है, जिन लोगों के शॉपिंग मॉल्स हैं उनके खिलाफ ये बात नहीं है। जनरली स्पीकिंग, जब तक सिनेमा घर आज़ाद नहीं होगा शॉपिंग मॉल से, आई डोंट नो कि फुटफॉल किस तरह होगा। क्योंकि अगर एक शख्स 4 लोगों को लेके जा रहा है तो वो 8,000 रुपये खर्च कर रहा है, उसको पॉपकॉर्न भी लेने, नाचोस भी लेने और सबके 1,000 रुपए के टिकट भी लेने, तो किस तरह करेगा वो फिल्म देखने के लिए? अच्छा, फिर वो पूछेगा तुमने देखी? हाँ मैंने देखी। तो कितने? अच्छा भाई मैं समझता हूँ 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 2.5। नहीं यार, आई एम नॉट गोना स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी ऑन दैट। सो यू सी, ये कंपैरिजन आ जाता है। आखिरी बात ये कि हम दुनिया भर का सिनेमा देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं 250 रुपये महीना में केबल को पैसे देकर। सब्सक्रिप्शन हमारे पास कोई नहीं है। अब हमारे पास डेटा सारा है दुनिया का, अब हम कंपेयर करेंगे बैठ के कि अच्छा वहाँ तो आप देखिए ये होता है, हम 2 रुपए में किस तरह बनाएं भाई वो चीज़। तो ये सब कुछ एक बड़ा ख़तरनाक एक लूप बना हुआ है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आखिर में सिनेमा में जाने वाले की वजह से फिल्म नहीं चल पाती और वो हम आपस में से डिस्कशन करते हुए रह जाते हैं। थैंक यू मोहिब, थैंक्स अ लॉट। अब मैं पाकिस्तानी टेलीविज़न की तरफ मूव करना चाह रही हूँ। एंड मोहिब, कंग्रेचुलेशंस ऑन रज़िया। What a huge success, what brilliant acknowledgement. And you know, obviously because हम जब पाकिस्तानी टेलीविज़न के बारे में सोचते हैं, the jury's kind of out on it, you know, because हम अनकही धूप के नारे के ज़माने के, you know, we were brought up on that. And it's not to say that all our dramas don't match up to that, लेकिन कभी ये ख्याल आता है कि have we moved in the right direction with Pakistani television or not? And you know, Sanam, हमने आपको, we haven't seen you that much on television, but of course we've seen you with so much of Asim Abbasi's, you know, you were in Cake, you've done another web series with him. So I want to bring all of you in really. Maybe Sanam, I'll start with you. Lekin, talk to us a little bit about Pakistani television, because it's still got an appeal clearly, you know, locally and globally. ऐसा नहीं है कि देखा नहीं जा रहा. Yet we're unsure of where the, you know, where we're moving. I know, it's very sad. I haven't done TV in 5 years. Yeah. A, because nothing appeals to me when the scripts come, and B, because when there is one good script, there's so many actors who are available for that. And then क्योंकि मैं दूसरे कामों में अगर मैं फंसी हुई हूँ तो फिर dates तो miss हो जाता है. But power of television is immense. हमारा सबसे बड़ा medium to influence people is television. And I always say this, हमारे जो आप लोग अनकही धूप किनारे की बात करते हैं, हम दुरे शहवार और ज़िंदगी गुलजार है की बात करते हैं, रकीब से, all of those dramas were the ones that really made an impact on people. It influenced women to finish their education. It made women understand their rights. It made women understand how it's not okay to take domestic abuse. आप अपने मैके जाएंगे तो किस तरह क्यों आप माँ बाप को अपने बच्चों को हमेशा वापस लेना चाहिए, ये नहीं कि अब आपकी शादी हो गई. तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे माशरे में प्रॉब्लमैटिक हैं, वो हमारे ड्रामों के थ्रू थोड़ा एक सोल्यूशन दिखा देती है, थोड़ा सही रास्ता दिखा देता है. और क्योंकि हमारी ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि दे आर द वंस हु कंज्यूम टेलीविज़न द मोस्ट, हम लोग ट्रैवल करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, दुनिया देखते हैं, तो हमारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ से हम चीज़ें पिकअप करते हैं, सीखते हैं, लेसन्स लर्न करते हैं एक्सपीरियंस से. हमारी जो औरतें हैं वो सिर्फ टेलीविज़न देख सकती हैं, तो जो उनको दिखता है उनको वही समझ आता है. अगर हम हमेशा मुश्किल सिचुएशंस, छोटी सोच, गुर्बत, औरतों पे तशद्दुद दिखाते रहेंगे तो औरत यही सोचेगी कि हाँ यही मेरी ज़िंदगी है, and she will never be able to change her mindset and grow from that. लेकिन जब हम एक पॉजिटिव सिचुएशन दिखाएंगे जहाँ पे एक औरत अपने प्रॉब्लम में से निकल सकती है, एक सपोर्ट सिस्टम है, ख़ास तौर पे घर वालों से एक सपोर्ट सिस्टम का उसको एक मिलता है बूस्ट, she can be inspired. I mean, this is, as we are now through social media, we're learning the importance of manifestation, visualization, meditation, positive impact. You know, we only talk about pregnant women getting positive impact. जब वो pregnant है तो सिर्फ अच्छी बातें करो, ये वो. तो इंसान को भी सिर्फ अच्छी बातें बताओ, दिखाओ, सिखाओ, not with through rose colored glasses, सच दिखाओ. लेकिन हर चीज़ के 2 sides होते हैं.
हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम के बहुत सारे तरीके होते हैं उसको हल करने के, तो हम एक ही उस पे एक ही तरीका दिखाते रहते, तो वो बहुत हमारे नाजुक दिमागों को इम्पैक्ट करता है, ब्लॉक कर देता है, and it just kills any idea of growth. So that's why the dramas that you talk about and the ones that I've done previously had that glimmer of hope and had that impact, a really strong impact, that there's so many young girls who became CSS officers just because of a drama. So it's got a huge impact. I miss television. I really value the impact of television. And I wish Beagle would just become the only writer for television because her scripts are unbelievable. I concur. I second that. Mohib, and then you've done Razia, you know, and it's that the role that you've done, uska ek apna impact hai, you know, and hopefully propels people to think and to move towards pushing the envelope a little bit. Thoda sa Razia ke bare mein zikr kijiye and tell us about, you know, your reaction when you got that script or aapne kya महसूस किया? जी, अक्सर शायरी सुनते हुए कहा जाता है कि वाह क्या अंदाज़े बयां था. सो अंदाज़े बयां क्या होता है? बेसिकली स्क्रीन प्ले. सो मेरे हिसाब से स्क्रीन प्ले मिसिंग है. जो हम टीवी की अगर बात करें तो एक सीन लिखा हुआ है, उस सीन को आपने परफॉर्म करना है, डायरेक्टर को जो हालात व वाक़यात मिलेंगे वो उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर देगा. लेकिन राइटर्स पर्सपेक्टिव के जी पाँव का शॉट है तो वो चला है, तो ज़रूरी नहीं कि घर पे दस्तक हुई तो दरवाज़ा भी खुले, पतीली में पानी भी भरा जाए और उसके बाद गुफ्तगू की जाए. आपको बीच की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गायब करनी होती. इसको कहते हैं स्क्रीन प्ले या अंदाज़े बयां, उस डायरेक्टर का या उस राइटर के साथ मिल के जो डायरेक्टर बनाएगा. सो रज़िया का जो फॉर्मेट था, वो जो ग्लोबल आजकल हम नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन की जो सीरीज़ पे डिस्कशन भी हमारे बहुत रहते हैं, वो उस स्ट्रक्चर में बनी हुई सीरीज़ थी. और मोहसिन अली जो कि उसके राइटर डायरेक्टर हैं, वो 6 एपिसोड लेकर मेरे पास आए कि मैं आपको 1-2 एपिसोड सुना देता हूँ. वो एक ही सेशन में मैंने 6 की 6 सुनी. उनसे कहा, मैंने कहा पढ़ते रहो, ये तो बहुत मज़े की है. क्योंकि जिस तरह से उसने बयान किया, कहानी कोई इतनी नई नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह बयान कर रहा था और जो स्क्रीन प्ले चल रहा था, जिसमें ज़रूरी नहीं कि बेइंतहा लंबे डायलॉग्स हों और वाह आपने 2 पेज तक बोल कर जो रुलाया है इस वक्त, ऐसा कुछ नहीं था. इंटेलिजेंटली रिटन स्क्रीन प्ले. तो ये एक सबूत है, अगर जिन लोगों ने देखा वो किस तरह से उससे कनेक्ट हुए. और मुझे एक बार फिर मौका मिला कि जी मैं एक ऐसा किरदार कर सकूं जो कि राइटर के पर्सपेक्टिव में भी, डायरेक्टर सेम गाय, और मेरे भी उसमें कि वो कोई बुरा आदमी नहीं था, बट उसके हिसाब से मेरी बेटी बाहर साइकिल नहीं चला सकती यार. अब वो कैसे रोके? अब वो सिचुएशन में तो बुरा बनता जा रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से एक नॉर्मल पाकिस्तानी है कि भाई लड़की बाहर साइकिल नहीं चला सकती और प्रोफेशनल साइकिलिस्ट तो बन ही नहीं सकती. तो ये कहानी थी रज़िया की. तो वो इवेंचुअली स्टक मेन इन सोसाइटी कि अगर वो कहीं एक छोटी सी ख्वाहिश का वो भी है कि अच्छा चलो हाँ कर लो, लेकिन वो इतना प्रेशर है उसके ऊपर कि नहीं ये तो नहीं हो सकता की सिचुएशन थी. और 6 किस्तें. सबसे कमाल बात ये थी कि कोई 30-22वीं किस्त 13-14 के बाद तो वैसे ही सीरियल बेचारा सफ़र करना शुरू कर देता है. तो ये बात है. और सारी चीज़ें जो सेम लग रही हैं, अगर बीगुल ने कहा कि या आपने कहा कि जी वो सनम ने 5 साल से वो नहीं किया है, उसका मुझे रीज़न नज़र आता है कि आसिम अब्बासी की किसी भी कहानी में स्क्रीन प्ले बड़ा स्ट्रांग होता है. सो एक्टर को वो जो कहानी सुनाने का अंदाज है वो बहुत समझ में आता है जब भी कनेक्ट होता है. तो ये सारी वजूहत हैं. आई थिंक कि स्क्रीन प्ले लिखना हर दफ़ा ज़ाहिर रोमांस ही होता है ना, तो अब आप किस तरह बयान करेंगे सिचुएशन को, वो सारा गेम है. तो मैं ये समझता हूँ कि स्क्रीन प्ले मिसिंग है. Abid, now we've spoken about, हमने censorship की काफ़ी बात की, and Faryal, this is for both of you really, लेकिन I think Vakri की director ने कहा था that I find it very interesting how people keep calling the film and its central character very bold. I've started realizing that a woman just expressing herself is bold. अब ये bold जो लफ्ज़ है, it's quite a complicated word which gets thrown around quite loosely. So Abid is somebody who's green-lighting scripts, who's, you know, part of this whole world. जब Vakri release की तरफ जा रही थी, and Faryal, you as well, what was the headspace like? And generally, Abid, जब आपके पास scripts आती हैं या when you're involved in these projects,
what are your, how do you negotiate the boundaries कि how much is too much? क्योंकि हम एक इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ सेंसरशिप है, जहाँ बैकलैश है, जहाँ एक बैनिंग का कल्चर है. Talk to us about that. Okay, so Vakri actually, Iram and I started this project way back in 2017. जी. ठीक है, it was Locarno Open Doors last year, focus on South Asia. और मेरी और इरम की बात हुई थी. मैंने इरम को कहा, यार तुमने जोश बनाई थी 2013 में रिलीज हुई, यू नेवर मेड एनी फिल्म इन पाकिस्तान. तो उसने कहा, यार पैसे नहीं है, कोई मतलब कहाँ से फंडिंग मिलेगी. आई हैव फाउंड फंडिंग, आई हैव लॉस्ट फंडिंग फॉर वन फिल्म, फॉर 2 फिल्म्स. मैंने कहा लेट मी ट्राई एंड यू नो टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स. किसी ने कुछ नहीं दिया, वो तो अपनी जगह पर है. बट वक्री स्टार्टेड 7 years ago actually. Or I was involved in the script development from day one. We both attended the Locarno workshop. From there, we got invited to Cannes at the Cinefantasia, the first Pakistani project ever to be officially invited to Cannes Film Festival. 2019, we were there. We got invited to the Asian Project Market, Busan. We got a small grant from Cape. वो सब करते करते अब how much is too much? This was too much a passion project for both of us. ठीक है, and then we got Apurva Bakshi, who's the producer of the celebrated Netflix series Delhi Crime, to come on board. Oh wow. So she's my producing partner, and we're doing some other projects together also. So वो हम तीनों ने बैठकर you know एक script, फिर सारी की back stories लिखी गई, सारे characters की. I never thought it's a bold film. I thought it's a very sensible film. It's a film that should come out to. It was specifically made for Pakistani audiences. तो हमने बहुत चीज़ों का ख्याल रखा कि क्या चीज़ हमें सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं. और that's why it passed the censorship. It never got banned. कि वो कभी मेरे दिमाग में था. मैं हमेशा इरम को, अपूर्वा को, दोनों को कहता था. But उसकी script in development went through so many phases. Initially we had the European script doctor Françoise Von Roy, who read the script, who gave us feedback, and then Iram rewrote it. Then with these 3 labs we attended, you know, we got feedback. Then Abigail Disney, who's Disney's granddaughter, her company came on board, Level Forward. So her CEO, Adrian Becker, and her team, they gave us feedback. The script went through a lot of development. That's why अब हमने feel किया जब shoot करना, when we started casting in, पैसे भी तो चाहिए थे ना. We're not coming from rich backgrounds कि यहाँ पर हमारे पास unlimited funds हैं. तो मैंने तो अपनी घड़ियाँ भी बेची, मैंने तो अपना आर्ट कलेक्शन भी बेचा, बहुत सारी चीज़ें बेची, जिसके बाद जाकर ये फिल्म बनी है. तो when we casted फरियाल, उस वक्त हमने किया कि अब तो फिल्म बनानी है, अब तो कुछ भी हो जाए, शूट करनी. बीच में कोविड भी आ गया था. तो बस वो शुरुआत थी. और उस वक्त तक कुछ पैसे कम भी थे. वो बाद में यहाँ से वहाँ से स्टील भी किए, चोरी किए, हुक और बाई क्रोक पैसे जमा करके. बट इट वाज नेवर एवर इन आवर माइंड्स के बोल्ड. लोग कह रहे हैं, आई सॉ अ यूट्यूब रिव्यू सेइंग कि पाकिस्तान की तारीख की बेहुदा तरीन फिल्म है. ठीक है, आई सॉ अ यूट्यूब रिव्यू, यूट्यूब vlog or whatever it is, वखरी थ्रू एन इस्लामिक लेंस. Oh my God. ठीक है ना. तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं. मतलब the day it was released, me and Faryal, we collaborated on a Instagram post, and I think on the first day of release there were 3,000, 4,000 comments. Just bashing me. Just bashing Faryal. Just bashing me. And hashtag ban Vakri was Ban trending Vakri, on yeah. day of release on Twitter, on X. So I think एक point पे when I was preparing myself and memorizing the script and doing looking at Kandil's interviews and studying and you know really getting into Noor and Vakri, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि how much is too much. क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में नहीं रहती, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ के लोगों को क्या डाइजेस्ट हो जाएगा, what would be okay. I think as an actor, yes, I had to do Vakri very seductive and very like, you know, enticing and थोड़ी सी provocative and
कि आपको गुस्सा भी आए उस पर, और लेकिन उसकी बात भी सुनने को दिल चाहे और मज़ा भी आ रहा है देखने का कि क्या बोल रही है और कि क्या पहना हुआ है इसने. But like, how do I, where is the line, you know? And I asked that. मैंने इरम से ये पूछा था. I was like, Iram, where do you think is the line? Even Iram did not have an answer to that. And I feel like as soon as I did the first scene for Vakri, जो उसका पहला monologue था, वो जब मैंने कर लिया और ये लोग जब पीछे बैठ के इन सब लोगों ने तालियां बजाईं, तो मुझे हुआ कि ओके, आई थिंक दिस इज इट. आई थिंक ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब यहाँ रहते हैं और ये सब देख रहे हैं. अगर ये टू मच हो जाता तो ये मुझे बताते कि ये बहुत सेक्सी हो गया, इसको कम करो. आई थिंक इट्स ओनली कॉल्ड बोल्ड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट LGBTQ community. We're talking about women's rights. We're talking about a lot of things that are not usually spoken about. हमारे प्यारे प्यारे channels ने भी हमें refuse कर दिया था कि हम इन promo नहीं चलाएंगे अपने channel पे क्योंकि it's too bold. So yeah, I think our channels need to get a perspective. ये जो ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े लोग जो थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि जाके exposure लें कहीं बाहर से, पढ़ें, लिखें, समझें, औरत को समझें, इंसानों को समझें, लोगों के राइट्स को समझें, लोगों के दिल को समझें, लोगों के दिमागों को समझें और फिर कुछ बनाएं. हम जब मॉर्निंग शोज वगैरह भी कर रहे थे फिल्म की रिलीज से पहले, तो जैसे फरियाल ने कहा, एक चैनल ने तो हमें मॉर्निंग शो से भी मना कर दिया. बोला नहीं जी, माफी, आपकी फिल्म बहुत बोल्ड है, हमने देखी है, हम किसी भी तरह इस फिल्म के साथ एसोसिएट अपने आप को नहीं कर सकते. सो वो एक डिफरेंट माइंडसेट है यहाँ पर. We didn't get a media partner. हमें भी नहीं होना. हमें भी नहीं होना associate उनसे. That's great. We're gonna wrap. मेरे नज़दीक बोल्ड इज खुलेआम करप्शन जो चल रहा है, औरतों पे तशद्दुद जो हो रहा है, मैरिटल रेप को ओके समझना, बच्चों पे जजों की बीवियां जो बच्चों को इस तरह इतना बीट अप करके एंड देन दे गेट अवे विद, these things are bold. These things are should be looked down upon, should be shocking, should be seen through the Islamic lens, because Islam में ऐसी कोई बातें नहीं थी जहाँ पे any of this was justified. So it's really a shift of power and perspective, and the only way we can do that is when the audience and the creators merge together and we tell the stories and you hear them, and then through your comments you encourage us to tell more of these stories. और इन बातों को highlight करें कि भाई बोल्ड ये नहीं है, बोल्ड ये है. सिर्फ औरतों के कपड़े और वो किस तरह अपने आप को इतनी obsession औरत के साथ क्यों है, इससे थोड़ा हटना है. और बहुत सी चीज़ें हैं हमारे माशरे में जिनको हाईलाइट करके उसको सही करना है, या आवाम को आवाज़ उठानी है टू काइंड ऑफ बैलेंस द पावर प्ले. Thank you, Sanam. That was really powerful. Thank you so much. And just before I open to the floor, we were sort of running short of time, but मेरा आखिरी सवाल आप सबसे ये है कि कहीं ना कहीं आप सबकी कहानियाँ पाकिस्तान से वाबस्ता हैं. They're in some shape or form connected to Pakistan. So I want to end by asking each of you, what is your relationship with Pakistan and what role do you envision playing in its story, big or small? Abid, maybe I'll start with you. पाकिस्तान हम पैदा यहाँ हुए हैं, बड़े यहाँ हुए हैं, हम काम यहाँ कर रहे हैं, हम कमा यहीं से रहे हैं, हम फिल्में भी अगर बना रहे हैं तो यहीं के लिए बना रहे हैं. मेरा हमेशा से ठीक है वो गोल वॉज कि भाई मैंने इस फेस्टिवल में जाना है, उधर जाना है, मेरी फिल्म को ये अवार्ड मिल जाए, वो मिल जाए. दोज वर गोल्स, बट एक्चुअली ऑल दोज फिल्म्स वर मेड फॉर पाकिस्तानी. आई हैव मेड 8 फिल्म्स. वक्री इज माय 8th फिल्म. ठीक है, 5 शॉर्ट्स, 3 फीचर्स. आई इवन मेड अ फिल्म, वेंट टू काजाकिस्तान एंड मेड अ फिल्म विद एन ऑल फीमेल क्रू इन काजाकिस्तान which premiered at the Tokyo International Film Festival last year. But again, काम यहीं करना है, यहीं के लिए बनाना है, यहीं लोगों को एडुकेट करना है और यहीं रहना है. कहीं मुल्क छोड़ के बाहर शाबाशी चाहिए. यहीं से शाबाशी. एक्चुअली वखरी का पाकिस्तान में रिलीज होना हमारे लिए इतनी बड़ा, लोग देखने गए, नहीं देखने गए, ज्यादा गए, कम गए, वो सब अलग है. बट वी हैड अ ग्रैंड प्रीमियर. You know, we were happy कि at least our film got to be on the big screen in the cinema in Pakistan. That was what we wanted. Me, Iram, Paryal, everyone, we all wanted कि भाई ये फिल्म पाकिस्तान में दिखाई जाए. Thank you, Abid. Faryal, What I would say is, you know, my mom
used to act here. My khala Ruhi Bano, she used to act here. She was considered a legend. उस वक्त जो काम होता था और जो जिस लगन से जिस पागलपन से काम होता था वो मुझे करना था, वो चाहिए था जो मैंने उनको करते हुए देखा है, जो मैंने अपनी माँ को करते हुए देखा है, you know. Yes, I am not a conventional actress. I do dress the way I want to dress, and I speak the way I want to speak, and I think that's freedom. And I think हर किसी के पास ये freedom होना चाहिए. And I think कि मेरी what I would bring to the industry is just freedom. Freedom of speech, freedom of being yourself, freedom of standing out, and just being completely free. Like आप अपनी सोच को आज़ाद करें, थोड़ा you know जीना सीखें. Everyone, I feel like it's people who I speak to here, they're so suppressed, deprived, and I just wish and I hope that I can keep working for the Pakistani industry and bring a change in just like how people think, shayad, hopefully. Is this on? जी. अब मैं उम्र के और करियर के जिस हिस्से में हूँ, अब तो रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे वाली सिचुएशन है. आई कैन नॉट रिलेट टू एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड. मैं इसी मिट्टी से ही जुड़ी हुई हूँ, मेरी कहानियाँ भी इसी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा हो नहीं सकता. उसकी वो सच्चाई बहुत इम्पॉर्टेंट है जब तक, और वो कहानी वही सच्ची होती है जो सॉइल से आपकी जुड़ी हुई होती है. और मेरा मुझ पर वो दौर गुज़रा है इनिशियली. पहले तो मैं कहना चाहूँगी आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हेयर, बिकॉज एक ये मेरी दो हीरोइंस बैठी हैं. सनम ने मेरा पहला सीरियल तलखियाँ किया था. शी वॉज वेरी वेरी यंग, शी स्टिल यंग, वो बहुत ही छोटी बच्ची थी. एंड शी प्लेड अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड शी वॉज वेरी ओके विद दैट. हिना बयात साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं. तलखियाँ में बहुत अहम इनका किरदार, इनकी सपोर्ट हमारे साथ थी. तो इन लोगों के साथ मैंने ये काम शुरू किया. खालिद अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया उस सीरियल को. तो इन लोगों के साथ मैंने ये काम शुरू किया. तो मुझे तो आई वॉज़ वेरी प्रिविलेज्ड. और दे आर फिनोमिनल आर्टिस्ट. ये कोई छोटे लोग नहीं हैं, ये कुछ और तरह से सोचते हैं और महसूस करते हैं. ये बहुत हसास लोग हैं, ये बहुत कीमती लोग हैं. बीच में ये दौर आता है कि आपको क्योंकि इतनी ठोकरें लगती हैं, इतनी रिजेक्शंस होती हैं, आपको दबाया जाता है क्योंकि आप कहीं सबवर्जन की बात कर रहे होते हैं, एक वैल्यू सिस्टम की. तो आप अगेंस्ट द करंट जब चल रहे हैं तो धक्के तो लगेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे. लेकिन अब मैं जब देखती हूँ तो मैं बहुत सेलिब्रेट करना चाहती हूँ आज की हमारी टेलीविज़न स्क्रीन को. देखिए, बात बदल गई है. अब वो थप्पड़ वप्पड़ नहीं पड़ते, अब वो अब्यूज़ उस तरह नहीं दिखाया जाता. हो सकता है कि एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग ना हो सकता है कि इतना इंटेलेक्चुअल ना हो, मगर नैरेटिव डेफिनेटली बदला है. बात अब सही क्या है उसमें ज़रा सा कन्फ्यूजन है. फेमिनिज़म को लेकर भी एक ज़रा सा कन्फ्यूजन है. प्लस देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्रेशन. मैं जस्टिफाइड समझती हूँ उस एग्रेशन को औरत के. उसने बड़ी मार खाई है भाई, अब ज़रा आप थोड़ा संभलिए, उसकी आवाज़ को सुनिए. मगर वॉइस मुझे लगता है औरत को मिली है, और वो सिर्फ टेलीविज़न से नहीं मिली, बहुत सारे आर्ट फॉर्म से मिली है. उन औरतों से जो सड़कों पे निकली हैं उनसे मिली है हम सबको. तो वो वॉइस तो इस्टेब्लिश हो गई है. फिर एक चेंज जो बहुत अच्छा आया है वो ये है, जैसे अभी मोहिब ने रज़िया का जिक्र किया. आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ सीरीज़ जो कि 8 एपिसोड की है फॉर आवर लोकल चैनल. 8 एपिसोड्स की 6 एपिसोड्स के सीजन्स अब आ रहे हैं. आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट जिसपे मेरे करीबी दोस्त, मेरे वेल विशर्स ने मुझे कहा कि इसके बाद तुम कहाँ जाओगी मत करो मत करो मत करो. बट आई से नो, आई थिंक कि मुझे ही करना चाहिए. तो चेंज तो मुझे तो नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बदल रहा है. और हम सब ने आप सब ने, हमारी ऑडियंस ने उसमें हिस्सा डाला है. यू बीन अ ग्रेट सपोर्टिव ऑडियंस. अगर हम रिजिलियंट हैं, आज भी हम यहाँ बैठे हैं, तो इस वजह से कि आप लोगों का हमें साथ रहा है. एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. और मुझे लगता है कि चेंज आया है.
मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहूँगा। मैं एक क्रिकेट मैच में दुबई में था, तो मुझे बहुत बड़े 2 प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स मिले पड़ोसी मुल्क के। तो वो कहने लगे मुझसे कि सारा टैलेंट तो आप लोग ले गए। मैंने कहा क्या मतलब इस बात का? तो कह रहे हैं सिंगर आपके पास, एक्टर आपके पास। मैंने कहा तो आपके पास भी तो हैं। कह रहे नहीं नहीं, जिस लेवल की परफॉर्मेंस आप लोगों की होती है, आपके सिंगर्स की होती है, वो तो कहीं नहीं होती। तो मैं सोचता रहा इस बात पे कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो पाकिस्तान में एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए बड़ा सप्रेशन है, और जब वो कोयला भट्टी में पकता है तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहता है, उसमें एट टाइम्स हम ओवर भी हो जाते हैं एक्सप्रेस करने में। लेकिन ये लेकिन ये कोयला भट्टी में बहुत ज़्यादा पक गया है अब फट ही गया है तकरीबन। लेकिन अब वो जो कोयले को हीरा बनना चाहिए, उसके लिए स्पेस की ज़रूरत है। वो स्पेस हम उसका तयन करने में ही कहीं लगे हुए हैं। मर्दों पे बेस होते हुए सीरियल्स भी हमने देखना शुरू कर दिए हैं। हमने जिस तरह कहा कि इन्होंने अबीगुल ने कहा कि जी वो अब थप्पड़ से बात आगे बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। एम्पावर्ड औरत ज़रूरी नहीं है कि वो ख़ास तरह के कपड़े पहने तो वो एम्पावर्ड होती है। वो एक कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत भी हो सकती है। हम अपने थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह जो स्टार होते हैं, फॉर एग्जांपल ईदी साहब या जहांगीर खान या वसीम अकरम की जिद्दोजहद, शोएब अख्तर की जिद्दोजहद, हमारे स्टार्स, हमने उस तरह स्नूकर चैंपियंस, इन लोगों के बारे में हम बात नहीं करते। तो कहानियों को इस तरफ भी लाना चाहिए, बेशक 6-8 एपिसोड की कहानियाँ हों। और अब चूंकि आपने निशानदेही कर दी कि खालिद अहमद यहाँ बैठे हुए, तो मैं हमेशा ये बात जिक्र करता हूँ कि अगर खालिद साहब ने मुझे टेलीविज़न में पहला मौका ना दिया होता तो आज मैं इस कुर्सी पे ना बैठा होता। तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो खालिद साहब ने डांटा था और कहा, स्क्रिप्ट उठा के फेंकी थी और कहा था क्या आप समझती हैं कि ये सिनेमा, ये यूरोपियन सिनेमा है जो आप ये लिख कर लाई? एंड देन ही केप्ट ऑन डायरेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल माय सीरियल्स। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतनी इज़्ज़त और प्यार पाकिस्तान से ही मिला है। एक नाम बना है, करियर पाथ, आई वॉज एबल टू परस्यू माई पैशन लिविंग एंड बीइंग हियर, बीइंग अ पाकिस्तानी। आई जस्ट होप टू थ्रू आवर वर्क हमारे यूथ को इंस्पायर करना चाहती हूँ, उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, एक रोल मॉडल उनके लिए बनना चाहती हूँ। क्योंकि वी ऑल ग्रू अप, I at least grew up with role models. I was inspired by people I looked up to. उनसे सीख के, उनसे इंस्पायर होके मैं अपनी चॉइसेस को शेप करती थी। तो मैं किसी ना किसी तरीके से अपने काम के थ्रू ही एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, जिससे हमारी जो ख़ास तौर पे लड़कियाँ हैं, but even young boys and women and men, everyone, I hope to shape their perspective and give them some sort of hope through acting, through storytelling, because it is such a powerful medium, like I keep saying. And that's it. I'm proud to be Pakistani. I'm proud to be here, and I'm proud for all the love that we get, and I hope to give that back. Thank you. Thank you so much. I wonder if we have time for a couple of questions, or yeah, we have 5 minutes. So, अगर आपका सवाल है, there's a lady in the second row. But thank you to all of you. Just before we open up, thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum salam. My question is to Mohib Mirza. In retrospect, what do you think was the reason that Ishrat Made in China, which was a totally commercial film, nothing arty about it in that way, it had all the masala and ingredients that you would think make it a commercial hit, and yet it was a flop. Do you think it was because you didn't do marketing and PR from ahead of time, or was it weak storytelling? What do you think you lost out on? I think उसको फ्लॉप बनने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने इतना देखा ही नहीं, तो वो लोगों तक पहुंचा जिनको नहीं पता जिस फिल्म की बात करें, मैंने ज़िंदगी में गलती एक ये की कि मैंने एक फिल्म डायरेक्ट कर दी, उसका नाम था इशरत मेड इन चाइना, विच मीन्स हैप्पीनेस मेड इन चाइना। 2 वजूहात हैं जो मुझे समझ में आई, एक बहुत सख्त बात है और एक बहुत नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात ये कि वही कि आपको ढोल बजाना होता है, ठीक ठाक मार्केटिंग करनी होती है, उस पर बहुत खर्चा होता है, ब्रांड्स को साथ जोड़ना होता है, और तब जाकर वो होता है। मैं एक फिल्म मेकर था, मेरा काम मार्केटिंग नहीं था। जिनके हवाले की थी वो मार्केटिंग जिस तरह हुई और जिस तरह प्रीमियर हुआ, वो जो भी हुआ वो एक अलग कहानी है।
फिल्म फ्लॉप आपके पर्सपेक्टिव में होगी, वो आज भी एमिरेट्स पे लगी हुई है और एयरलाइंस पे लगी हुई है और अच्छा खासा पैसा बना रही है. इट विल टेक सम टाइम रिकवरी और प्रॉफिट तक पहुंचने में. चूंकि माशाल्लाह हमारे एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सिर्फ 100 रुपए में से 35 रुपए बचता है, 50% एग्जिबिटर को जाता है और 15-16% जो है डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है. तो कोई बिजनेस प्लान फिल्म का वैसे ही नहीं है. और जो नंबर्स आपके हिसाब से जो सुपर हिट फिल्में हैं, अगर उनका हकीकतन नंबर देखा जाए तो वो भी सब झूठ है. तो सख्त बात यह है कि बहुत ज़्यादा पैसा चलाना पड़ता है एक फिल्म को हिट करने के लिए, जो कि एक फसाड ही होता है. इसीलिए सिर्फ मैंने एग्जांपल मौला जट की दी जिसने वाकई ट्रू सेंस में पैसे कमाए. बाकी तो अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से. We have one last question there. Azra Appa. My question actually should have been to all these brilliant, educated, talented stars of my country. My question has a relevance, first of all, to introduce myself. I am into industry and I'm one of the former presidents of the Karachi Chamber of Commerce and Industry. मुझे आप लोगों की गुफ्तगू से एक थोड़ा सा टिंट जो मिला वो ये कि शायद आप लोग ऑडियंस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं पाकिस्तानी. जो मेरा जो फीलिंग है वो ये है कि जिस तरह हम लोग ट्रेड और इंडस्ट्री में अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया से डिटैच हुए और पाकिस्तान की ट्रेड और इंडस्ट्री ने कॉलोसल लॉस किया और लॉस कर रहे हैं, और शायद जब तक ट्रेड दोस्ती नहीं करेंगे तो वो नुकसान होता रहेगा. क्या पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी इस डिटैचमेंट से नुकसान हुआ? एनी ऑफ यू प्लीज आंसर. बहुत ज्यादा हुआ है मेरे ख्याल से, इतना ही कह सकता हूँ. बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देखें 2018-19 में पाकिस्तानी सिनेमा भरा हुआ होता था. आपको फूड कोर्ट्स में भी बैठ के खाना खाने की भी जगह नहीं मिलती थी और एडवांस में टिकट्स लेनी पड़ती थी. आप जाके काउंटर से टिकट नहीं ले सकते थे. आज ये हाल है कि एक 300 सीटर सिनेमा में बमुश्किल 20 लोग होते हैं, 30 होते हैं, कभी वो भी नहीं होते हैं. सो वो जो एक कल्चर बना हुआ था सिनेमा जाने का, बन गया था पाकिस्तान में. 2007 में खुदा के लिए आई थी, फिर उसके बाद बोल आई और उसके बाद 2013 में 6-7 फिल्में रिलीज हुई. मैं हूँ शाहिद आफरीदी और जोश और बहुत सारी. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों ने सिनेमा जाना शुरू कर दिया था. एंड 2018-2019 वाज द पीक. But then COVID happened and then the Hindi cinema got banned and Bollywood got banned in Pakistan. So one, COVID also played a big role. People got more used to watching Netflix, Prime and other subscriptions that they have, or even if they don't have subscriptions, the illegal cable TV. और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके यार कौन सिनेमा जाएगा. मुझे बहुत सारे लोगों ने भी मुबारकबाद दी पिछले 20, 25, 30 दिन में. फिल्म को 6 हफ्ते हो गए लगे हुए कि कांग्रेचुलेशंस आपकी फिल्म लगी है. मैंने बोला आपने देखी? नहीं. मैंने कहा आई कांट एक्सेप्ट योर कांग्रेचुलेशंस. तो ऑडियंस से नाराजगी नहीं है. आई थिंक व्हाट वी आर लैकिंग इज द सिनेमा कल्चर. मोर देन टॉकिंग अबाउट रिवाइवल, वी नीड टू रिवाइव द कल्चर. अनदर प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव सिनेफाइल्स इन पाकिस्तान. यू नो, अगर आप फ्रांस चले जाए या दुनिया में कहीं और चले जाए, द पीपल हु स्टिल वांट टू गो एंड वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन. हम इस पे देखकर खुश हो जाते हैं. हम रील्स देखकर आजकल खुश हो रहे हैं. एक शादी में जिस दिन फिल्म मेरी रिलीज हो रही थी उससे 1-2 दिन पहले एक शादी में गया. मेरा एक बहुत पुराना दोस्त वहां मिल गया. मैंने कहा तुम देखने चले जाना, कल रिलीज हो रही है. कहता है यार 1-1 मिनट की रील देख लेता हूँ यार, 2 घंटे कौन बैठ के सिनेमा देखेगा. ठीक है. सो आई थिंक द कल्चर हैज चेंज्ड. कैन वी ब्रिंग दैट कल्चर बैक? दैट्स अ बिग लॉन्ग डिबेट. Yes, but answering the question, if the Bollywood again is allowed to, you know, Hindi cinema again is allowed to come over here, at least Pakistani films को उसका spillover तो ज़रूर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, and that would be a start. I think I also agree. I would just like to add कि सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा ही नहीं, ये बड़ा competitive art form है. ईरानी सिनेमा, यूरोपियन सिनेमा, बंगाली सिनेमा आप लाइए, हॉलीवुड लाइए, हर किस्म की फिल्म यहाँ लगनी चाहिए तो एक कल्चर इमर्ज करेगा. जिसको जो चाहिए देखना वो देखने जाएंगे. और मुहिब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आज़ाद करें आपकी सिनेमा. आपके मैसेज की स्क्रीन्स ही नहीं है जो कि एंटरटेन, और उनके पास क्या अब एंटरटेनमेंट है. वो रील्स ना देखें तो कहाँ जाएं बेचारे.
तो आप उनके लिए अगर आप मैसेस की सिनेमाज खोल देंगे जैसे पहले था, जिसके ऊपर पंजाबी एंड पश्तो सिनेमा फ्लरिश किया फॉर ईयर्स, आपने उनकी भी छुट्टी करा दी और उसको भी इस्लामिक लेंस लगा के आग लगा दी आपने सिनेमा को। और मैं कहीं देख रही थी कि सबसे पहला सिनेमा जो जलाया गया पाकिस्तान में वो कोयटा का सिनेमा था। तो जब आप ये कर रहे हैं तो फिर आप किस तरह कर सकते हैं? तो उम्मीद रखते हैं कि आपकी इंडस्ट्री भी कुछ दोस्ती की तरफ जाए, फ्लरिश करे और हमारी इंडस्ट्री भी जाए और सबकी फिल्में हो। मैं तो जाके हर किस्म की फिल्म देखना चाहती हूँ। और सर मैंने तो बिल्कुल भी ऑडियंस से नाराजगी नहीं की, मैंने कहा ऑडियंस तक हमारी बात ही नहीं पहुंच पा रही, जिसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। और डिप्राइव्ड हैं ये बिल्कुल। आई डोंट नो कि मैं तो नहीं ये कह रहा, वरना मैं यहाँ इस वक्त बिल्कुल भी बैठा हुआ नहीं होता अगर मैं ऑडियंस में तंदूरी हट का हलवा पूरी खा रहा होता आज। तो लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ऑडियंस तो सब कुछ है। हम तमाशा कर रहे हैं तो थिएटर कर रहे हैं, अगर हम एक्ट कर रहे हैं तो ऑडियंस से फीडबैक के लिए कर रहे हैं, नाराजगी तो बनती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस अजरा आप had a question. उनको माइक दे दें। माइक है एक और? जी बहुत माजरत के साथ कहूँगी सबा, आप इस तरफ तो देख ही नहीं रही हैं, आपकी नज़रें सिर्फ उस ऑडियंस पे। अच्छा ये बहुत सबसे पहला हाथ मैंने उठाया था। फरियाल ने यहाँ बैशिंग की जो बात की, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मेरा सवाल कोई नहीं है कि जो लोग ये बैशिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे तो वो बहुत जहनी दबाव का शिकार हैं जी। उनको बिल्कुल इतना भाव मत दीजिए कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी बैशिंग का आप जिक्र करें, क्योंकि उनको अल्लाह मियाँ ने एक ज़बान दी है और बिल्कुल इस चॉइस ओपिनियन दिया है। बिल्कुल हाँ, चॉइस उनकी है, वो अच्छा बोलें या बुरा बोलें, अच्छा लिखें या बुरा लिखें, तो उन्हें बुरा लिख लेने दीजिए। नो आई एम उनको भाव कंप्लीटली मत दीजिए इतना, क्योंकि यही वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन मैं बात करूं। बिल्कुल हाँ। द थिंग इज आई डोंट इवन टॉक अबाउट इट। Abid brought it up because this is new for Abid. You know, he was like, हमने ये post लगाया collaborate करके। Just ignore them. They are mentally ये पहली दफा इनके साथ हुआ है, इस वजह से ये हिल गए। No. Because they have some issues, mental issues. Definitely. वो अपना गुबार निकालना चाह रहे हैं, उन्हें निकाल लेने दीजिए, वो इसी में खुश हैं। तो इस पे प्लीज उनको इतना भाव मत दीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए जो भी। बिल्कुल, थैंक यू। I agree. एक आखिरी अहम बात पे मैं ज़रा वो पॉइंट करना चाहता हूँ। OTT प्लेटफॉर्म हम आजकल बहुत कह रहे हैं, OTT ओवर द टॉप, पता नहीं ये कहाँ से कोविड के बाद से ये OTT वाला मामला बहुत आ गया है, जो कि यार तुमने मिर्ज़ापुर देखी नेटफ्लिक्स पे, तुमने फलाना देखी अमेज़ॉन पे, ये हम लोग बहुत कर रहे हैं, हमारा कोई नहीं है सच सामने आ पा रहा। टैपमेट है, एक दो और हैं, मोबलिंग का आई थिंक जैज़ का है, कोई तमाशा है, एक ऐप है शायद, इस तरह से कुछ एक्टिविटी हो रही है, लेकिन हम एज ए नेशन फ्री चाहते हैं सब कुछ। एक तो आधी कौम का बैंक अकाउंट नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज अ गेम, एक बड़ा मामला है वो कि जी ट्रांजैक्शन करना। फिर हम आधे से ज़्यादा बाकी जो बचते हैं, आधे से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ही नहीं चाहते कि भाई रसीद आ जाएगी। उसके बाद अब वो सब्सक्रिप्शन मॉडल जब आपके सामने आएगा तो उसको भरना कैसे, ये बहुत बड़ी टास्क है। हमें आदत हो गई स्क्रॉल करने की। मैं ट्रेडमिल पे कोविड में अब जाता हूँ तो 45 मिनट की सीरीज़ की एपिसोड देखना चाहता हूँ ऑन माई ट्रेडमिल। अब मेरी आदत ये बनना शुरू हो गई है। अगर हम फ़ोन पे अपने अटेंशन स्पैन की बात कर रहे हैं कि हमें रील्स की या उसकी आदत हो गई है, उसका एक फ़ायदा भी ये है कि हम चाहें तो उसको पॉज कर सकते हैं और वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आबाद करना आसान नहीं है, इसमें कैटेगरीज, ख़ास तौर पे किड्स के लिए, बच्चों के लिए कोई कैटेगरी नहीं है। वो हमें आबाद करनी होगी, उसको उतनी प्रोग्रामिंग बनानी होगी, उतने ड्रामा सीरियल्स बनाने होंगे, उतने सीरीज़ जो 6 एपिसोड 8 एपिसोड की होंगी, फिल्म्स होंगी, उसको भरते भरते भी बहुत टाइम लगेगा। तो अब ये कोई प्लेटफॉर्म जो कि प्योरली बेस्ड हो, वो कैसे डिटर्मिन होगा कि हमारी कौम रेडी है टू पे एवरी मंथ और ईयरली पैकेज? आई डोंट नो। सो ये भी एक मामला है टू कम्पीट कि कंटेंट आप तक, आपके मोबाइल स्क्रीन तक या आईपैड तक या टैबलेट तक पहुंच सके। तो उस पर भी हमें थोड़ा सोचना होगा एज यू नो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। आई थिंक
Thank you so much, Sanam, Mohib, B, Faryal, Abid, and to all of you for coming. Bahut shukriya. Thank you for a wonderful conversation. Thank you so much. Saba, thank you. Dog